Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So, today we will discuss the new topic that is called male rotation. Male mean abnormal. Whenever the word come male, it's mean abnormal. अब ये abnormal rotation of the stomach or gut that is called of male rotation. It is the anomaly of the mid gut rotation during fetal life. क्या होता है जब fetal life में mid gut की rotation होती है वो अगर abnormal होती है it will leads to the condition known as male rotation which can cause improper positioning of the bowel, that is small bowel clumped on the right side. Fibration, formation of a fibrous band. मिड गट की जब रोटेशन एबनॉर्मल हो जाए और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरह की राइट साइड पे आ जाती है देयर इज अ बैंड फॉर्मेशन दैट लुक लाइक अ वेरी वेरी हार्डर बैंड दैट इज कॉल्ड लेड बैंड्स तो रिमेंबर इन एग्जाम कि लेड बैंड इन इन्वेस्टिगेशन विल बी सीन इन अ केस ऑफ मेल रोटेशन और अगर इंटेस्टाइन की जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाए उसकी पोजीशन एबनॉर्मल हो जाए it will increase the risk for volvulus and duodenal obstruction. We will discuss what is volvulus, what is obstruction, and what is entasusception. तो आगे बढ़ते हैं कि what is meant by entasusception first. Actually, जो entasusception है, it's mean it is the telescoping of proximal bowel segment into the distal segment, most commonly at the ileocecal junction, typically seen in infant and rare in adult. It's mean इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली एज इसका मतलब ये है कि अर्ली एज के अंदर इन्फेंट लाइफ के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वो अंदर जनाब डिस्टल पार्ट में चली जाए दैट इज कॉल्ड एंटासुसेप्टम इट्स मीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि अगर फॉर एग्जांपल हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम तो अगर किसी डिफेक्ट की वजह से जो जेजुनम है लाइक जेजुनम इज प्रॉक्सिमल टू इलियम एंड ड्यूडेनम इज प्रॉक्सिमल टू जेजुनम अगर यहाँ पे जो जेजुनम है वो गलती से किसी भी डिफेक्ट की वजह से वो इलियम में चला जाए सो टेलीस्कोपिंग और इन्वेजिनेशन ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट इनटू द डिस्टल पार्ट this concept is known as a entasusception. It is usually idiopathic in children, but it is frequently due to identifiable lead points. Idiopathic form is associated with recent viral infection like adenovirus infection, rotavirus vaccine, Pierce Paris hypertrophy may act as a lead point. Common lead point is इसमें जो lead points है जो head points है children के अंदर मिकल diverticulum, small bowel hematoma and IgA vasculitis. In adult there is intraluminal mass. These are the point where we can focus more क्योंकि इन तरह की पॉइंट्स को हम मजीद जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर ये वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ समवन हैज अ गुड कमांड ऑन दिस एरिया दे विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ एंटासुसेप्शन देखिए एंटासुसेप्शन के अंदर इन लोगों ने जो मेन पॉइंट्स आप लोगों को समझाई है वो ये है कि एक्चुअली इट कैन काज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वस्कुलर कंप्रोमाइज क्योंकि जाहिर बात है कि अगर एक पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इंटेस्टाइन का वो डिस्टल में चली जाए तो फिर इट कैन काज ऑब्स्ट्रक्शन और वहाँ की जो लोकल ब्लड वेसल है उस पर प्रेशर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इस्कीमिया इट कैन काज ऑन ऑफ इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन वोमिटिंग ब्लडी एंड क्यूरेंट जेली स्टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड क्यूरेंट जेली स्टूल अगर क्यूरेंट जेली की बात आ जाए तो अगर एग्जाम में आ जाए कि एक पेशेंट है उसको क्यूरेंट जेली स्टूल है दूसरा एक पेशेंट है उसको क्यूरेंट जेली कफ है लाइक स्पूटम है तो क्यूरेंट जेली स्टूल इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ एंटासुसेप्शन बट क्यूरेंट जेली कफ या क्यूरेंट जेली स्पूटम that is a classical feature of infection known as Klebsiella. And Klebsiella is a bacteria which can cause respiratory tract infection in alcoholic patients. So remember these two are very very important. Physical examination पे sausage shaped mass होगी in the right abdomen. Patient may draw their legs to chest to ease the pain. Ultrasound will show the target sign. तो एक्चुअली अब यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बताने जा रहा हूँ इसको गौर से सुने anyone who is brought by their parents with the complaint of intermittent abdominal pain, vomiting, and current jelly stool. On palpation, there is a right lower quadrant tenderness and ultrasound shows target site. Think about
In this kid, the proximal part of intestine goes into the distal part, and this condition is known as endosusception. फिर इसके बाद है वॉल्वुलस. अब वॉल्वुलस क्या चीज है? इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ पोर्शन ऑफ बाउल अराउंड इट मेजेंट्री. इसका मतलब कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट अगर ऊपर जो है ना इस तरह ट्विस्ट कर जाए, मतलब एक पार्ट का अपने ऊपर ट्विस्ट कर जाना, दैट इज कॉल्ड ऑफ वॉल्वुलस. तो ट्विस्टिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन अराउंड मेजेंट्री वो वॉल्वुलस है. और डिस्टल पार्ट में प्रॉक्सिमल पार्ट का चले जाना वो इंटरसेप्शन है. It can also leads to obstruction and infarction. Why? Because if one part of the intestine is twisting, it will compress the blood vessel nearby to decrease blood supply to the organ. अगर उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, इस्कीमिया होती है, it will increase the risk of infarction. It can occur throughout the GIT tract. Gastric valvulus is more common with anatomical abnormality like paraesophageal hernia, present with severe abdominal pain, dry, heavy and inability to pass nasogastric tube. क्योंकि एक पार्ट अगर दूसरे में चली गई है, इट एरिया बिकम obstruct. उस बंदे में अगर आप फिर एनजी ट्यूब पास करेंगे, इट विल नॉट गो अप. फिर इसके बाद मिड गट वाल्वुलस मोर कॉमन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, दैट इज माइनर. मिड गट इज माइनर, दैट इज नॉट दैट मच सीरियस, बट इट इज कॉमनली सीन इन इन्फेंट. और जो सिग्मॉइड कोलोन है, ये सीनियर के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर होता है. And therefore, it is a coffee bean shaped sign on X-ray, more common in adults. मैंने MRCP प्लेब के अंदर ये क्वेश्चन जो प्लेबेबल है उसके अंदर ये क्वेश्चन है कि any patient who has left-sided abdominal pain an investigation later shows coffee bean sign on X-ray, think about sigmoid valvulus. तो जो गैस्ट्रिक वाल्वुलस है ये एनाटोमिकल डिफेक्ट के साथ होता है. जो मिड गट वाल्वुलस है ये बच्चों के अंदर होता है. और sigmoid valvulus commonly seen in adults. But valvulus के अंदर the most common complication that is called infarction. कि लोकल जो एरिया है उसमें अगर ब्लड सप्लाई इतनी कम पड़ जाए कि वहां पे लोकल सेल की डेथ हो जाए, इट कैन लीड्स टू infarction. इसके बाद है अदर intestinal disorder like acute mesenteric ischemia, like critical blockage of intestinal blood flow of an embolic occlusion of superior mesenteric artery. अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसके अंदर कोई क्लाट आ जाए और वो स्टक हो जाए, द बिग क्लाट, इट विल compromise and it will decrease blood supply to many part of the small intestine, which result small bowel necrosis. Abdominal pain out of proportion is a stronger clue ruled out, that is acute mesenteric ischemia. इसको हम abdominal angina भी कहते हैं. देखिए, may see recurrent jelly stool. Risk factor is atrial fibrillation, peripheral arterial disease, recent MI, and congestive heart failure. So any patient who has a history of DVT or any patient who has a history of thrombosis, अगर thrombosis की history patient में sudden onset abdominal pain आ जाए, that is out of proportion, think about acute mesenteric ischemia. इसके बाद एंजियो डिस्प्लेजिया. एंजियो मीन ब्लड वेसल, डिस्प्लेजिया मीन एबनॉर्मेलिटी. इट इज द tortuous abnormal dilatation of the blood vessel which is leads to hematochezia, that is a fresh blood in the stool known as hematochezia, more often in the right sided colon, more common in older patient, confirmed by angiography. क्योंकि the problem is in the blood vessel angio, it is also confirmed by angiography. It is associated with end-stage renal disease, von Willebrand factor disease, that is a autosomal dominant coagulation disorder, and aortic stenosis. लेकिन इतना याद रखें, which valvular heart disease is highly associated with angiodysplasia, that is aortic stenosis. For angiodysplasia, it is the problem of blood vessel which is characterized by fresh blood in the stool, especially in older patient. फिर है chronic mesenteric ischemia. That is a type of intestinal angina, atherosclerosis of celiac artery, superior mesenteric artery most commonly affected. अगर एक पेशेंट है उसको ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाए, एंड दैट विल लीड टू abrupt sudden onset pain, that is acute mesenteric ischemia. अगर स्लो onset आ जाए, that is chronic mesenteric ischemia. इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि इसमें जो आप लोगों ने चीज याद रखनी है, इसमें इंटेस्टाइनल हाइपोपरफ्यूजन, the blood supply to the intestine become decreased, and postprandial epigastric pain mean after the meal the patient will pain a lot of pain and food aversion and weight loss. Aversion का मतलब ये है कि the patient will say I can't eat more, क्योंकि वो खुराक खाएगा
उस पे जब इंटेस्टाइन काम करेगा, पहले से उसकी आर्टरी में, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में क्लॉट होगी, तो जब वो गाना कहेगा तो पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर द मीट द पेशेंट विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया। फिर है कोलोनिक इस्कीमिया, इट इज अ क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन फॉलोड बाय हेमेटोचीजिया, commonly occur at watershed area, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। The area where already blood supply is very decreased, like splenic flexure and rectosigmoidal junction, and there is a thumbprint sign on the image due to mucosal edema and hemorrhage. इसको हम कहते हैं ischemic colitis। अगर फॉर एग्जांपल कोलोनिक इस्कीमिया हो जाए, जहाँ पे ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द कोलोन कम हो जाए, which is characterized by inflammation, that is called ischemic colitis। फिर इलियस है इंटेस्टाइनल हाइपोमोटिलिटी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इंटेस्टाइन है और उसकी जो मोटिलिटी है वो कम हो जाए, बट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल, सो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड इलियस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज फ्लेटस, डिस्टिंक्टेड एब्डोमेन एंड डिक्रीज ब्लड साउंड, मतलब जो बाउल साउंड है वो भी कम हो जाती है। associated with abdominal surgery, opioid like morphine, hypokalemia, sepsis, and no transitional zone imaging. Treatment is bowel rest, electrolyte correction, cholinergic drug. Why? Because those drugs which increase acetylcholine, they will increase gastric motility. तो हम cholinergic agonist देंगे जिससे हम gastric motility को क्या कर सके, increase कर सके। फिर इसके बाद है necrotizing enterocolitis. Now, what is meant by this? Necrotizing enterocolitis. It is seen in premature formula feed infant with immature immune system. Necrosis of the intestinal mucosa, most commonly terminal ileum and proximal colon, which can lead to pneumatosis intestinalis. That is very very important. Necrotizing का मतलब क्या होता है? That is necrosis. Necrotizing is the word come from cell death, necrosis. Entero means small intestine or colitis means inflammation of large intestine. So a condition characterized by necrosis of the cells in the terminal ileum and proximal part of colon, which commonly affects the premature birth, that is called necrotizing enterocolitis, and that is a pediatric emergency. फिर इसके बाद proctitis, inflammation of the rectum mucosa is called a proctitis, usually associated with infection like Neisseria gonorrhoeae, chlamydia, and Campylobacter, Shigella, Salmonella, herpes simplex, cytomegalovirus, IBD, and radiation. Patient report tenesmus, मतलब incomplete emptying of the anal canal, rectal bleeding, rectal pain, proctoscopy revealed. Proctoscopy is a procedure through which we can see the rectal mucosa. उसमें inflamed rectal mucosa, ulcer, vesicle, alopecia, herpes simplex. Rectal swab are used to detect other infectious etiology. फिर है small bowel obstruction. It is a normal flow of intraluminal content is interrupted, fluid accumulation and intestinal dilatation proximal to blockage and intestinal decompression distal to the blockage। इसका मतलब ये है कि अगर ये इंटेस्टाइन है, अगर मैंने ये इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट लिया है, तो अगर यहाँ पे obstruction है तो फूड विल नॉट कम डाउन, अब इधर तक तो आएगा। तो दिस इज द एरिया प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज द एरिया डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो एरिया प्रॉक्सिमल है उसमें फूड आएगा, इट विल बी डायलेट, सो द एरिया प्रॉक्सिमल टू ब्लॉकेज विल बी डायलेट। लेकिन जो एरिया जिसमें फूड नहीं आ रही, डिस्टल है, इट विल बी डिकम्प्रेस। पेशेंट प्रेजेंट विद एब्रप्ट ऑनसेट एब्डोमिनल पेन, नोजिया, vomiting, abdominal distension, compromised blood flow due to excessive dilatation or strangulation may lead to ischemia, even necrosis and perforation. Most commonly caused by intraperitoneal adhesion, like fibrous band of scar tissue, tumor and hernias. ये सारे के सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर एक बच्चा है तो उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो म्यूकस है, मतलब जो मेकोनियम प्लग है न्यूबॉर्न के अंदर, वो मेकोनियम इलियस कराती है। और अगर फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन बिकम डायलेटेड अलॉट एंड इट कैन परफोरेट, अगर इसकी परफोरेशन होगी तो फिर यहाँ से क्या होगी, एयर लीक करेगी, and that air will go up in the abdomen and there will be settle right under the right diaphragm, that is called free air under the right diaphragm is also a sign of perforation। ये क्या होती है, परफोरेशन। तो एयर फ्लूइड लेवल परफोरेशन, एयर फ्लूइड लेवल ये इंटेस्टाइन में होगा, और एयर अंडर द राइट डायफ्राम इज सीन इन इंटेस्टाइनल परफोरेशन।
gastrointestinal decompression, volume resuscitation, and bowel rest. So this is what all about the small bowel obstruction. The last one is very, very important, and they ask multiple times in your exam. That is small intestinal bacterial overgrowth syndrome. भाई इस पे हमने थोड़ा सा बहस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द एबनॉर्मल bacterial overgrowth in the small intestine, normally low bacterial colony unit. इसका मतलब जो कॉलोनी काउंट है इंटेस्टाइन के अंदर, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो नॉर्मली कम होता है, लेकिन अगर इसकी लेवल एबनॉर्मली हाई हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड. इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, तो देर इज एक्सेस excess bacterial overgrowth in the intestine that is abnormal, known as small intestine bacterial overgrowth. इसकी रिस्क फैक्टर अल्टर्ड पीएच है, फिर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, फिर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, ब्लाइंड लूप, डिसमोटिलिटी, these all are the different causes. But what important is that these patients present with bloating, flatulence, abdominal pain, chronic watery diarrhea, malabsorption like feedback in severe cases. एग्जाम के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आता है, ये इवन मैंने रिसेंटली जो एग्जाम दिया था एमआरसीपी, ये उसके अंदर भी आया था, एंड आई रिमेम्बर कि इसका क्वेश्चन जो आता है, दे आर प्रेजेंटेड विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम लाइक ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, abdominal पेन, chronic watery diarrhea, but they will say that carbohydrate breath test और small bowel culture. तो carbohydrate breath test है, ये जिस डिजीज के लिए कराई जाती है, that is small intestine bacterial overgrowth syndrome. So these were some of the common intestinal pathology. ये इतनी ज़्यादा जनाब लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है. अगर आप लोग इसको सही तरीके से गो थ्रू करेंगे, इनमें से आप लोगों का एक ना एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाती है. अब यहाँ पे देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर इसके हम नीचे जाए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें यहाँ पे क्या है, दिस एरिया फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम जाएं तो दिस एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटेस्टाइन है that look like red because of blood supply vascularity, but this area become now black. This blackish area in the intestine that is called necrosis. ये क्या है, नेक्रोस है. और इसमें अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये एयर है, these are called pneumoperitoneum, that is called air in the peritoneal area या pneumoperitoneum. और ये हमारे पास decompression है, ये क्या है, decompression. This is what all about from topic today. Inshallah, today in the next chapter, topic we will discuss another topic. Allah Hafiz.